Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विषय रे पढिबा सो देखो याकू जानिबा पई हेले हमको फर्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन जानिबा को हबो सो दैट we have to find out the Lagrange's equation of motion for small oscillation and thereby its solution already हमें small oscillation रे दुई प्रकार इक्विलिब्रियम विषय रे पढिला गोटे हला स्टेबल आ गोटे हला unstable so here in this case we will consider the displacement of particles which are restricted to small deviation from stable equilibrium position and further we consider only conservative system where the potential energy is a function of position only okay आउ जेते सब constant गुडा अछि which are time dependent ताकू हमें exclude करिबा from our formulation so a system of particles is said to be in stable equilibrium if all the particles are and remain at rest so गोटे conservative force field रे generalized forces acting on each particle must vanish zero हो it is given by a force टा qj equal to minus del v by del qj which is at equilibrium position okay so this equation will give you the values of q0j which are the equilibrium position of the generalized coordinates okay of the particle now जदि आमे displacement नेबा ए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन सपोज डिस्प्लेसमेंट को हमें कहला uj ताले वी आर गेटिंग द न्यू कोऑर्डिनेट दैट इज qj इक्वल टू q0j प्लस uj ओके एठी q0j हेगला इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच इज द फिक्स्ड वन uj हेगला डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम ओके एंड we will discuss now the potential energy and thereafter the kinetic energy okay first है potential energy को हमें in terms of Taylor series at equilibrium position ए हिसाब रे जदि लिखुछु एटा देखो v as a function of n generalized coordinates okay that is q1 q2 up to qn which is also said to be a function of u1 u2 un याकू हमें एबे टेलर सीरीज रे हिसाब रे लिखि परिबा okay first term then second term which is the first order derivative then third term which is the second order derivative and higher order terms भी रहउची तबे एठी लक्ष्य करो हमें ऑलरेडी देखिला जे हमर स्मॉल ऑसिलेशन रे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बा इक्विलिब्रियम पोजीशन रे this term del v by del qj must be 0 okay so eta 0 हे गला तापरे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रही थाए सो ये मिनिमम वैल्यू को जदि हमें 0 नहीं गला ताले ए फर्स्ट टर्म भी 0 हो जिवो सो वी आर लेफ्ट विथ द थर्ड टर्म ओके आउ बाकी जते हायर टर्म को सपोज हमें कंसीडर कला नहीं सो ए टर्म टा बाकी रहिला ओके सो याकू एबे हमें जदि लेखिबा ताले देखो v इक्वल टू दिस मच ओके वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन एबे हमें याकू कोफिशिएंट यूज जदि कर देला vjk व्हिच इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ताले इजीली याकू हमें शॉर्टकट रे लिखि देला ओके एंड फर्दर रिमेंबर एठी हमें इंटरचेंज भी करि परिबा ए जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को सो दैट vjk इक्वल टू vkj ओके व्हिच आर कांस्टेंट्स राइट तापरे एठी ए जो कोफिशिएंट हमें नेला vjk vkj एक्चुअली दे कैन बी अरेंज्ड in form of a symmetric matrix okay symmetric matrix which is v right तापरे एठी फोर्स जोटा हमें लिखिथिला qj equal to minus del v by del qj now
this is also minus del V by del Uj, or simply minus Vjk into Ug. ओके सो ये है पोटेंशियल एनर्जी रो एक्सपांशन. एबे पुणी देखिबा हमें काइनेटिक एनर्जी रो टेलर सीरीज एक्सपांशन. याकू हमें जदि लिखुचु एज ए होमोजेनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी दैट इज हाफ mjk ହେଇଗଲା एक्चुअली कोफिशिएंट मास तमे कहि पारो. तापरे qj डॉट qk डॉट ए जो डॉट अछि ता माने सपोज q डॉट दैट मींस this is del q by del t. okay with respect to time याको हमें differentiate करूछु. okay एटा होची डॉट रो रिप्रेजेंटेशन. so this is also equal to half summation mjk uj dot uk dot. एटी ए जो कोफिशिएंट को हमें नउछु like this. okay एटा हेगला respective coefficient, right? अच्छा, these are also functions of n generalized coordinates, that is q1 q2 up to qn. okay now ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमें देखा पाऊँ काइनेटिक एनर्जी रो इट विल बी लाइक दिस. एठी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पे हमें ए mjk याकू एक्सपांड करबा एक्चुअली. ओके अबाउट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. सो एटा हला इक्विलिब्रियम पोजीशन रे एटा आछि फॉर द टर्म्स. ओके जोटा कि डिफरेंशिएट करूछु. सो हियर as the kinetic energy is already quadratic in the small quantities, that is uj dot, so we cannot use the higher order terms. Therefore we consider only the lowest order approximation. so ei kebol ei first term ko ame consider kariba. okay acha, and these are symmetric with respect to the indices j and k, माने interchange करले भी एका value ही आसीबो. okay ताले दुईटा जाको value एबे पाई गला परे आमे एबे लैग्रेंजियन बाहर करि परिबा. l इक्वल टू t माइनस v लैग्रेंजियन आमे जानिचो. सो l रो वैल्यू एति की आसिला. thereafter we put the value of this Lagrangian in the Lagrange's equation of motion, which is this one. okay तापरे याको एबे हमरो सॉल्व करिवार अछि. सो देखो एई जो इक्वेशन 12 देखियो को पाउचो याको हमें इन टर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखि परिबा. okay this is the formation of the matrix. okay शॉर्टकट रे लिखले याको बोल्ड करके ए बडा लिखा जाय t u डबल डॉट प्लस v u इक्वल टू 0, राइट? अच्छा, नाउ ए जो इक्वेशन 12 इक्वेशन 13, this actually represents the equation of motion near the equilibrium, obviously stable equilibrium. okay and each of the n equation will generally involve all the coordinates and it is this set which must be solved. याको हमरो सॉल्व करिवार अछि ए लैग्रेंजियन इक्वेशन को. सो सॉल्यूशन जदि हमें गोटे डायरेक्ट सॉल्यूशन नै गला सपोज uk इक्वल टू दिस मच. ओके एठी c हे गला गोटे स्केलर फैक्टर. ओके व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल द कोऑर्डिनेट्स, राइट? तापरे एक्चुअली देखिया को हेले जदिओ एठी एक्सपोनेंशियल टर्म अछि एंड it can be negative or positive, but actually a solution रे only real part ही हमें नेबा. we consider or we take the real part of the solution. काहे कि real part नेबा एठी देखो एठी स्टार मार्क रे याको एक्सप्लेन करिछि. ओके सो एटा तमे निजे सेल्फ स्टडी करिवो. रियल पार्ट देखो एमती बाहरुछि. ओके फर्दर मूविंग ताले एबे हमरो सॉल्यूशन जोटा थिला Lagrangian equation रो this one. okay for an n particle system these are the equation written in full expansion. expand करके ए equation को j equal to 1 2 up to n हमें लिखि देला. okay so these are n simultaneous linear homogeneous equation for n unknown aj coefficient जोटा and can be solved for n minus 1 unknowns of these in terms of remaining one. तो सिंपली कहबा को हेले आमे जदि डिटरमिनेंट बाहर करूछु कोफिशिएंट सबुरो. ओके जो कोफिशिएंट होची ए जे तार जदि आमे डिटरमिनेंट बाहर करला. ओके ताले डिटरमिनेंट ए बढिया आछि. ओके आ याको आमे इक्वेट करबा विथ 0. सो इक्वेशन एटा जो पाइला इक्वेशन 16 एटा आछि हमरो सेकुलर इक्वेशन. दिस इक्वेशन in fact is of nth degree
for the frequency omega square and will possess n number of roots, that is omega 1 square, omega 2 square up to omega n square, for which our solution, that is equation 14, represent a possible solution. Okay, so the value of omega are your normal frequency. Okay, normal frequency माने गोटे single frequency आमे नबा जोटा आमे आपको पढ़िबा. Okay, so for each of these frequency value equation 15 can be solved for n minus 1 ak's जोटा coefficient थिला. Okay, of the remaining ak. Okay, अच्छा equation 15 जो ऊपर थिला ताको हमें matrix form रे एई भलिया भी लिखि परिबा. Okay, where a is the column matrix having n components. Now let us see the properties of T, V and omega. देखो फर्स्ट कथा है एटी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल सपोज आम ना. ओके, फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल will turn out to be real positive quantity जोटा ऊपर आम देखिला, and here we will have completely oscillatory condition about the position, that is the stable equilibrium position. Okay, oscillation habo, small oscillation जेतेबेले ए ओमेगा एल हो जाउची real positive. However, characteristics that renders the frequency as described above will be so useful that the numbers जोटा कि coefficient आमे देखुतिला a के corresponding to a given frequency omega, which can be obtained by solving a set of n homogeneous linear equation जोटा ऊपर आमे equation 15 रे देखिला. Okay, and they represent the behavior of the physical system. Okay, now therefore we say that ak ए जो coefficient एटा represent करूची गोटे normal mode of frequency को, and each frequency will possess its own mode of vibration that can exist independent of the other modes. Okay, गोटे single mode रहिबो जोटा कि बाकी जेते मोड सहित किछि भी तार डिपेंडेंसी रहिबो नहीं, तेणु करी आमे याकू कहिबा नॉर्मल एई वर्डटा यूज करूछु. Okay, so to distinguish between different modes and to identify a particular mode. Okay, so आमे गोटे सेकंड सब्सक्रिप्ट एबे यूज करिबा a k न लिखि कि आमे यूज करिबा आ गोटे सब्सक्रिप्ट l, so that we will write akl, which will denote the kth normal mode corresponding to lth frequency, that is omega l. Okay, ताले we proceed to show that omega l square are all real numbers. Okay, real quantities. Suppose akl जोटा हमें ऊपर देखिला याकू हमें नहीं जिबा आउ हमरो इक्वेशन 15 रे लगेबा. इक्वेशन 15 रो एई भलिया हमें पाउछु. सपोज ओमेगा एल स्क्वायर को हमें लिखिला इक्वल टू लैम्बडा एल. ओके, लैम्बडा एल. फर्दर ए इक्वेशन 1 जो हमें देखुछु यार जदि हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बाहर करिबा, सपोज आ गोटे फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम स्क्वायर. ओके, ओमेगा एम स्क्वायर पाई सिमिलरली लैम्बडा एम पाइबा आ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बाहर कर दबा. ओके, so we will obtain a equation like this. एबे equation 1 रे ajm star, star माने complex conjugate, and we will sum it over j. Similarly, we multiply equation 2 with akl and sum it over k, right? एतिकी करि सारला परे हमें दुइटा को माइनस करिबा. ओके, सो LHS टा accordingly एतकी आसीबो, RHS accordingly एतकी आसीबो. So here you see that LHS रे एटा दुइटा समान अछि और प्लस माइनस अछि, सो कटि की 0 हो जिवो. ता माने एठी हम RHS को इक्वेट कर देला 0 सहित. Now we consider the first case with L equal to m. ताले accordingly equation एबे चेंज हो गला. Now it can be shown that this quantity is not equal to 0. Okay, it will be a positive quantity. केमती होउची देखो ए जो प्लस मार्क अछि तळे यार डेरिवेशन करिछि. सो कॉन्सिक्वेंटली हमें पाइला कोन निहाती भाबरे लैम्बडा एल माइनस लैम्बडा एल स्टार इक्वल टू 0 और लैम्बडा एल इक्वल टू लैम्बडा एल स्टार. ता माने रियल क्वांटिटी जा तार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सहित समान हो जाउची. एटा पॉसिबल केतेबेले जेतेबेले लैम्बडा एल इज रियल. ओके, it cannot be a complex number, right? That means omega l square are all real quantities.
Okay, now since lambda L are all real, so all the components, that is AKL, will also be real. So AJM star को आमे लिखि परिबा simply AJM. Alright, so एठी देखो accordingly लिखि देला आमे ए हिसाब रे आउ lambda L रो जो आमे replacement नीतिला ताकू पुट कर देला which is omega L square. Accordingly lambda M ही जिवो omega M square. ताले मूल इक्वेशन जो हमर थिला सेइथरु आमे पाई परिबा omega L square रो value which is the ratio like this. Okay, so एठी जो कहउतली एटा होची तार डेरिवेशन जे देखो पॉजिटिव क्वांटिटी एटा आछी which is not equal to 0. Okay, you can go through it. Now moving further, this equation predicts that omega L square is a positive quantity. Okay, काहे की positive quantity, again एठी double plus mark अछि एटा भी तळे देखिबो. Okay, एटा को dagger भी कहै छै ए मार्क को से जा भी हो. Therefore the eigenfrequency are all real quantities and the motion for a given omega L square will be completely oscillatory about the stable equilibrium position where the potential energy is not minimum. आमे जानिछु stable equilibrium position रे तो potential energy minimum, किंतु potential energy जो जगह रे minimum नुह माने आमे एबे unstable अडकु जाउछु ताले जो equation 7 रे numerator अछि that will be a negative value and hence motion with imaginary frequency will be arised. Okay, so this will arise unbounded motion with exponential rise in uj with respect to time. Okay, so accordingly ame unstable equilibrium आडकु जिबा so that एबे हमरो equilibrium जोटा आमे देखुतला unstability बा disturbance create होबो. Okay, से जा भी हो जदि एबे आमे कहूछु omega L square is not equal to omega M square, then equation 6 रू आमे पाउछु जे एई summation टा equal to 0 हबो. Okay, provided L is not equal to M. ए कंडीशन को कहबा आमे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी किंबा आ गुटे जिंस भी आमे पाई परिबा अनसर्टेनिटी को रिमूव करबा पई जे जदि एई समेशन टा इक्वल टू 1 होची व्हेन L is equal to M. एटा होची नॉर्मल प्रॉपर्टी, नॉर्मलाइजेशन. सो दुईटा को जदि कंबाइन कर देबा आमे we will get the orthonormal condition. So here RHS रे आमे यूज करबा गुटे सिंबल डेल्टा ml जाको कहा जाए क्रोनेकर डेल्टा सिंबल. ओके, माने एई जो डेल्टा ml रो वैल्यू इक्वल टू 1 हबो when m is equal to L and it is equal to 0 हबो when m is not equal to L. Okay, so we may rewrite equation 9 जोटा एटा like this. अच्छा, याको मैट्रिक्स फॉर्म रे हमें एही हिसाब रे लिखि परिबा A ट्रांसपोज देन T A which is equal to I हे गला यूनिट मैट्रिक्स बा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देखो एटा भी केमती आसिला ए जो स्टार मार्क अछि तळे यारो एक्सपेंशन देछि. अच्छा, पुणी आमे फेरिबा इक्वेशन 1 को जदि इंट्रोड्यूस करिबा गुटे डायगोनल मैट्रिक्स लैम्बडा with elements that is lambda ml equal to lambda L into delta ml, that is the Kronecker delta symbol. Then equation 1 accordingly ए हिसाब रे चेंज हे गला. ओके, देखो अच्छा तापरे ए जो फॉर्मेशन टा हमें पाइला याकू अगेन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म हमें लिखि परिबा like this VA equal to TA lambda. Now multiplying above equation by A transpose. Okay, A transpose multiply कर देला we'll get this and A transpose TA already यार value identity matrix बा I हमें पाई सरचु. So simply याकू 1 put कर देले हमें पाउचु A transpose VA equal to lambda. Okay, अच्छा एति की जाए पहुंचला परे now we are coming to the normal coordinates and the normal frequency or normal modes of vibration. Okay, so amaro ebe solution bahar karibar achi of the equation of motion where only one single frequency jaku ki kahuba ame normal is involved in the solution, and in such a case the coordinate appearing in it will be called as normal coordinate. Therefore generalized coordinates jota achi each one of them executing oscillation of one single frequency yaku kahiba ame normal coordinate. Okay, so transformation equation of motion jota into such coordinates
that is your normal coordinates denoted by, suppose आमे याकू denote कला with a symbol eta, and therefore Lagrangian will be effected by means of linear transformation. Okay, so suppose आमे गोटे नुआ set of coordinates लिखला eta k. Okay, eta k such that जोटा आमर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थिला बा डिस्टर्बेंस बा डिस्प्लेसमेंट जोटा थिला uj एई दुई भितरे रिलेशन हैला uj इक्वल टू समेशन ओवर k aj k eta k. ओके, सो एबे एई uj आउ eta k याकू जदि हमें एक्सप्रेस करछु एज द एलिमेंट्स ऑफ सिंगल कॉलम मैट्रिक्स दैट इज u एंड eta बोल्ड करा हिची. सो u इक्वल टू a eta याकू हमें मैट्रिक्स फॉर्म रे एबे लिखि देला. ओके, मन रख u आउ eta होची कॉलम मैट्रिक्स रे. ओके, अच्छा तापरे in order to find the Lagrangian in the new coordinates, एबे नुआ कोऑर्डिनेट रे हमें Lagrangian जदि बाहर करिबा, again we have to find out the potential and kinetic energy. Potential energy accordingly हमें पाइगला this much which is half u transpose vu. ओके, तापरे एटा होची ओल्ड कोऑर्डिनेट रे, नुआ कोऑर्डिनेट रे हाफ eta ट्रांसपोज लैम्बडा eta है जिवो. ओके, एठी हमें यूज करूछु a ट्रांसपोज va जोटा ऊपर हमें वैल्यूटा पाइला इक्वल टू लैम्बडा इक्वेशन 13 रे जो वैल्यू हमें पाउछु. ओके, फर्दर एठी पोटेंशियल एनर्जी को आउट टिके शॉर्टकट रे हमें लिखि देला हाफ लैम्बडा l eta l. ओके, समेशन ओवर l नीचू और लैम्बडा l रो वैल्यू तुम जेंति जानिचो ओमेगा l स्क्वायर एटा आसिला पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यूटा. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंगली याकू लिखि जिबा. सो यार वैल्यूटा फाइनली हमें पाउछु हाफ eta l डॉट स्क्वायर. ओके, दुईटा जाको वैल्यू हमें पाई गला. सो Lagrangian which is l equal to t minus v याकू हमें लिखिला अकॉर्डिंगली del l by del eta l dot and del l by del eta l एटा बाहर करिबा. काहे की बाहर करिबा? बिकॉज़ हमको याकू सब्स्टिट्यूट करिवार अछि इन द Lagrange's equation of motion. ओके, सब्स्टिट्यूट कर दबा जदी देन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन. ओके, सो एटा एक्चुअली गोटे इक्वेशन नुह समेशन अछि देखो. Okay, therefore the equations of motion in the new coordinates are like this. एटा आछि ए जो इक्वेशन ऑफ मोशन नुआ कोऑर्डिनेट रे accordingly. So एठी एबे लक्ष्य करो in the above equations we find that the coordinate suppose eta 1. Okay, eta 1 कोठी अछि ए फर्स्ट इक्वेशन रे अछि. Okay, and it is involving or it is corresponding to only one frequency that is omega 1. एठी omega 1 अछि. Okay, similarly eta 2 जदि हमें देखिबा, eta 2 correspond का करछि omega 2 को करछि. That means for each coordinate we are having one single frequency. Each coordinate executes only one single frequency of oscillation. ता माने एटा हला normal coordinates और normal frequency बा normal mode of vibration. सो एबे जदि एई इक्वेशन रो हमें सॉल्यूशन बाहर करिबा रैंडमली, सपोज हमें कहिला eta l डबल डॉट प्लस ओमेगा l स्क्वायर eta l इक्वल टू 0 ए इक्वेशन टाको नै गला. ताले सॉल्यूशन रो एबे एक्चुअली तीनटा केस आसी पारे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ओमेगा l स्क्वायर. जदि पॉजिटिव हला किबा इक्वल टू 0 हला और जदि नेगेटिव हला. ओके, अकॉर्डिंगली वी विल हैव 3 नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन. सो एबे फर्स्ट केस रे लक्ष्य करो. Here omega l square is real and positive. Okay, so all the coordinates will remain finite for any time t. Okay, now we can say that the equilibrium is stable for the first case. First case पाई एटा होची stable equilibrium position. किंतु लास्ट दुईटा केस जदि हमें कंसीडर करिबा जोथरे कि ओमेगा l square is 0 how negative, here we find that the coordinates become infinite. Okay, that means as the time advances, time जते कि बढ़िबो धीरे धीरे कोऑर्डिनेट ता इंफिनिटी आड़ को अप्रोच करिवो, and consequently such type of solution will indicate the unstable equilibrium जोटा हमरो दरकार नै. हमरो दरकार होची केवल stable equilibrium. So we consider the first solution. Okay, now coming to the normal modes of vibration. Suppose ए ओमेगा जोटा कि एक्चुअली ओमेगा होची एंगुलर फ्रीक्वेंसी याको हमें लिखि परिबा इक्वल टू 2 पाई न्यू. न्यू हे गला फ्रीक्वेंसी. सो अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन टा ए भले हमें लिखि देला where a और b
Actually, these are 2n arbitrary constant which are to be determined from the initial conditions. Okay, now suppose we choose these constants such that all except a1 and b1 are 0. बाकी सब 0 ହେଇଗଲା କେବଳ a1 ଆଉ b1 को ଛାଡ଼ିକି. Then only coordinate जोड़ा रहिला कोटा eta 1. Okay, eta 1 will vary periodically with respect to time while all the other coordinates will remain 0 for all the times. So such a situation will correspond to a normal mode of vibration. That is, we say that the system is vibrating in a normal mode, and obviously any coordinate can be given liberty to vary with time by such a choice of coordinate. Tanukari, we can have n numbers of normal modes of vibration with n normal frequency, that is nu1 nu2 up to nu n corresponding to each normal coordinate जोटा कि नुआ कोऑर्डिनेट हमें पाइला eta 1 eta 2 up to eta n. Okay, so equation 7 जोटा अछि, we can write that equation as eta l equal to al cos omega lt plus delta l. एठी delta l टा क्रोनिकल delta symbol नुह, this is the phase factor. Okay, so confuse होबनी. So equation 1 जोटा थिला हमरो old coordinates रे ताको हमें accordingly लिखि देला uj equal to this much. Okay, now up to this I have taken the normal coordinates and normal modes of vibration from one book. Same thing I have taken from another book. एठी जो general theory of small oscillation same जिनस start हैला आ गुटे बहिरु नेछि देखो एठी भी ठीक एका जिनस potential energy तार Taylor series expansion, then kinetic energy रो expansion, right? तापर Lagrangian बाहर कला, then secular equation in order to get the eigenvalue equation, right? So eigenvalue equation to finally we are getting the solution of the eigenvalue equation जोटा कि determinant को हमें equate करला 0 सहित secular equation. Okay, तापरे same जिनस ही बाहर करा होची एठी column matrix ने गला a के coefficient को, then you can see small oscillation in the normal coordinates. Okay, एठी symbol टिके change होची, सेतिरे eta लिखा हितला एठी a लिखा हिची. Okay, small difference are there. Okay, तापरे at the end यार देखो जो प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज TA इक्वल टू I एटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स सहित इक्वेट करूची BA इक्वल टू TA लैम्बडा बाहर कला. ओके, तापरे एठी लैग्रेंजियन इक्वेशन बाहर करूची न्यू कोऑर्डिनेट्स रे जोटा नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, राइट? नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स रे बाहर करिकी तार पुणी सॉल्यूशन बाहर कला. सॉल्यूशन को पुणी ये रियल नौची बा पॉजिटिव वैल्यू नौची, डिस्कार्ड करूची बाकी जते वैल्यू को. ओके, इट इज टेकिंग the omega l square to be positive and real. Okay, so same जिनस ए बहिरु भी तमे पढ़ी की आराम से नोट करि परिबो. Okay, so this is all about the normal coordinates and normal modes of vibrations. Thank you.